हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस खास वीडियो में हम ये जानने वाले हैं कि जूम ऐप, गूगल मीट ऐप और माइक्रोसॉफ्ट टीम ऐप में कितना डिफरेंस और कंपैरिजन होता है। तो इन तीनों ऐप्स डिफरेंस और कंपैरिजन देखने के लिए यह वीडियो एंड तक देखते रहे और यह वीडियो देखने के बाद आपको अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलो तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। Hello everyone, today I will talk about the video conferencing apps. If you are confused which one to choose, these apps are used for meeting, student online classes and just casual video calls. And these three apps we are going to compare. First is Zoom. Zoom has many securities and privacy issues. Zoom supports up to 1000 video participants and 49 videos on screen. Screen sharing and screen recording, team chats or virtual background without screen in Zoom. This is about the Zoom application. And the second software is Microsoft Teams. It features included 250 video conferencing and background blur, file sharing, screen sharing, individual and group chats, and screen recording. Attendance list can be downloaded. This is about the Microsoft Team app. And the third software is Google Meet. Google Meet available for G Suite customers. Google Meet supports 250 participants per call and live streaming 1 lakh viewers. This meeting can also be recorded, stored in Google Drive. It is also integrated with G Suite apps like Google Calendar, Gmail for the better integration. The feature of file sharing is not available in Zoom and Google Meet. और यह वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।